Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's preview. So friends, in aphorism number 111, Dr. Hahnemann has discussed about agreement with poison drug effects. किस तरीके से कई poisons जो हैं, for example लेकेसिस का poison या फिर arsenic, that all poisons are used as drugs. तो किस तरीके से उनका ड्रग के फॉर्म में इफेक्ट होता है, that has been discussed in aphorism number 111. Moving on to aphorism number 112, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन ऑफ ड्रग्स. जो भी प्राइमरी एक्शन होता है ड्रग्स का ह्यूमन बॉडी पे, प्रूवर पे, और उसका सेकेंडरी एक्शन क्या होता है, कौन से ड्रग्स के प्राइमरी एक्शंस हमें नोट करने हैं वाइल ड्रग प्रूविंग, कौन से ड्रग्स के सेकेंडरी एक्शन यूज करने हैं ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग, वो सारी बातें aphorism नंबर 112 में डिस्कस की गई हैं. Moving on to aphorism number 113, some exceptions are mentioned, that is narcotics are exception, जिसका हमें हमेशा secondary effect note करना होता है while drug proving. So here is the exception to primary and secondary action which has been discussed in aphorism number 113, that are narcotics and counteraction. Moving on to aphorism number 114, primary action of moderate dose on the prover. किस तरीके से जो प्रूवर होता है उसके ऊपर प्राइमरी एक्शन मेडिसिन का होता है, मॉडरेट डोज का होता है, that has been discussed in aphorism number 114. Moving on to aphorism number 115, alternating action of the drugs has been mentioned. Moving on to aphorism number 116, proving of drug on groups. किस तरीके से ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स के ऊपर ड्रग्स को प्रूव किया जाता है, that has been discussed in aphorism number 116. Moving on to aphorism number 117, this is again a very important aphorism which discusses with the idiosyncrasy, which is a very important point that must be remembered for exam point of view as well, because idiosyncrasy एक बहुत important topic है जिससे exam में कई बार questions पूछे जाते हैं. Moving on to aphorism number 118, individualization of drugs. Individualization is again a very important topic which is related to drug proving as well as which is very important for exam point of view. So आप सब याद रखेंगे that aphorism number 118 में डॉक्टर हैनमन ने इंडिविजुअलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया है. एंड बेसिकली इंडिविजुअलाइजेशन किस चीज का, ड्रग्स का. Moving on to aphorism number 119, individualization of drug action. किस तरीके से डिफरेंट ड्रग्स का डिफरेंट एक्शन होता है एंड ऑल द एक्शन ऑफ द ड्रग शोज इंडिविजुअलाइजेशन. तो किस तरीके से इंडिविजुअलाइजेशन हमें ड्रग्स के एक्शन में देखने को मिलता है, दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड रेड इन aphorism number 119. Moving on to aphorism number 120, Dr. Hahnemann has mentioned about careful drug proving. किस तरीके से हमें careful drug proving को execute करना है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसका हमें ध्यान देना है, all those points has been mentioned in aphorism number 120. So